وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Inshallah, we begin Surah Kahf today. And before we begin, we pray to Allah subhanahu wa ta'ala to make it easy for us in our recitation, translation, understanding, and implementation. Ameen. Ya Rabbal Alameen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful, all praises be to Allah, the one who sent down upon his slave the book and not placed in it any crookedness. Qayyiman, absolutely straight, absolutely clear, absolutely perfect, absolutely categorical. Any of these words can be used. That it may warn of a punishment severe, min ladunhu, from near him, and to give glad tidings to the believers, those who do righteous deeds, anna lahum ajran hasana, that for them is a reward best. Makithina fihi abada, they shall abide in it forever. And to warn those who said, has taken Allah a son, not for them in it any knowledge, and neither for their forefathers. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Most mighty or most awful is the word that comes out of their mouths. Not they say except kaziba, a lie. अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान खूब रहम फरमाने वाला, तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए है, वो ज़ात जिसने नाजिल किया अपने बंदे पर किताब और नहीं रखा उसमें कोई कजी, बिल्कुल दुरुस्त, ताकि वो डराए सख्त तरीन अजाब के बारे में अपने तरफ से और खुशखबरी दे उन लोगों को, खुशखबरी दे ईमान वालों को जो अमल करते हैं नेक, कि उनके लिए है अजर बेहतरीन, वो रहेंगे उसमें हमेशा। और डराए उन लोगों को जिन्होंने कहा अल्लाह ने बना लिया किसी को बेटा, नहीं उनके लिए उसके बारे में कोई इल्म और ना उनके बाप दादा को। बहुत बड़ी बात जो निकलती है उनके मुंहों से, नहीं वो कहते सिवाय झूठ। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहफ के सूरतुल कहफ की इब्तिदाई आयतों में अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह ने नाजिल किया किताब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और इसको वाज़ेह तौर पर अल्लाह ने जो है अपना पैगाम लोगों की तरफ, हिदायत का पैगाम लोगों की तरफ पहुंचा दिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है ये किताब ऐसी है जो खुशखबरी देते हैं उन लोगों को जो ईमान ले आए और अमल करते हैं नेक, कि उनके लिए बेहतरीन अजर है, और डराए उन लोगों को जो बेहुदा और फालतू बकवास बकते हैं और कहते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नऊजुबिल्लाह बेटा ले लिया। ये जो है बड़ी खतरनाक बात है जो उनके मुंह से निकलती है, और ये पूरी झूठ घड़ते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन द ओपनिंग वर्सेस ऑफ सूरह कहफ has clearly mentioned that this Quran is a perfect book of guidance. All its commandments are categorical. There is no element of ambiguity anywhere at all. It is perfect in every sense and every way. It is perfect. There is absolutely no contradiction in any of these verses. On the contrary, every verse complements the other verse and adds more meaning to it and gives them a wholesome knowledge and wholesome information and wholesome package of guidance. This is how Allah subhanahu wa ta'ala has made this Quran so perfect. And Quran warns of a punishment severe to those people who reject it, those people who utter blasphemous statements, and at the same time gives glad tidings to the believers, those who do righteous deeds, that for them is the reward excellent. And the reward excellent means paradise, where they shall abide in it forever. Surah Kahf has its own significance. From the authentic hadith of the Prophet ﷺ, we come to know that Prophet has said that whoever
memorizes the first 10 verses of Surah Kahf and the last 10 verses of Surah Kahf, Allah will protect him against the fitna of the Dajjal, against the trial of the Dajjal. जो पहली 10 आयतें सूरह कहफ की और आखिरी 10 आयतें सूरह कहफ की जो हिफ्ज कर दें, जो याद कर लें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको दज्जाल की फितने से महफूज रखेगा. And Surah Kahf, we all know, is the most recommended surah to be recited on a Friday, not as a ritual, but because it has several information and message for you and I to reform our lives in the light of it. हर जुमे का पढ़ने का भी जो है ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत रही. And anybody who recites Surah Kahf on a Friday, then from one Friday to another Friday, Allah subhanahu wa ta'ala blesses him with a special nur, special light on which he moves ahead in life. तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके लिए, उस शख्स के लिए जो सूरह कहफ हर जुमे को पढ़ते हैं, एक जुमे से लेते हैं दूसरे जुमे तक, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको ऐसा नूर देते हैं जिसकी रोशनी में वो जिंदगी गुजारता है. And Surah Kahf was actually an answer, or rather a response and reply by Allah subhanahu wa ta'ala to some of the questions put forth by the mushrikeen and by the disbelievers on the instigation of the Ahli Kitab, namely the Jews. If you are a true prophet, tell us about the companions of the cave. If you are a true prophet, tell us about the meeting of Hazrat Khizr with Hazrat Musa alayhi salam. If you are a true prophet, tell us about Zulqarnain. These were the three fundamental questions which they put forth. And Allah subhanahu wa ta'ala not only gave them a befitting reply, but also made its contents so powerful that anybody who reads it with reflecting upon the verses will find several aspects of guidance and so much of information and knowledge. तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये सवालात जो उनके सामने अल्लाह के रसूल के सामने रखे गए, उसका जवाब अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक बेहतरीन सूरत नाजिल फरमाता है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला सिर्फ उन सवालों का जवाब नहीं देता है, बल्कि जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसमें बहुत सारे जो है अहकामात, बहुत सारे वो इल्म की बातें और हमको जो है नसीहत की बातें इस सूरत में हम पाते हैं. So the first now is about the Ashab Kahf, about which Allah subhanahu wa ta'ala gives the facts and the truth about the sleepers of the cave. What are they? Inshallah, we'll study it very short. فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. Then perhaps you may destroy yourself. Allah is telling the Prophet sallallahu alaihi wasallam, then perhaps you may destroy yourself upon following them up if they do not believe in this message in grief. Asafa means in grief or sorrow. Verily we have made whatever upon the earth zina. Zina means as an adornment, as an attraction, that we may test them, ayyuhum ahsanu amala, which of them is best in deeds. And verily we shall surely make whatever upon it a soil barren. तो शायद कि आप हिलाक कर लेंगे अपनी जान इन लोगों के पीछे पड़ते हुए, अगर वो नहीं ईमान लाए, अगर वो नहीं ईमान लाते इस पैगाम पर आप गम के मारे. बेशक हमने बनाया है जो कुछ जमीन पर है एक रौनक, उसमें एक जीनत और उसमें रौनक हमने रखी है, ताकि हम आजमाएं उनको उनमें से कौन बेहतरीन अमल करता है. और बेशक हम बना देंगे जो कुछ उस पर है एक वक्त पर चटेल मैदान. The Prophet sallallahu alaihi wasallam used to be highly worried, anxious, concerned, and highly worrisome that the people are not accepting this message of the Quran. He used to go and knock at every door. He used to meet every individual on a personal level. हर फर्द से जो मुलाकात करते थे अल्लाह के रसूल, हर घर का दरवाजा खटखटाकर इस पैगाम को लोगों के पास पहुंचाते थे. But there were no takers. And Prophet sallallahu alaihi wasallam used to feel very low, depressed, disappointed. रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशान हो जाते थे. गम और दुख के साथ जो है वो घुलते जाते थे. क्या हो गया, मेरी कौम मानने को तैयार नहीं है, क्या हो गया, मेरी उम्मत इस पैगाम को मानने को तैयार नहीं है. ये गम के मारे जो है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशान होते थे.
उनको चैन नहीं मिलता था. There was absolute mental agony under him he was experiencing. So Allah subhanahu wa ta'ala is intervening and saying, you can't do this with the Prophet. You are supposed to only convey the message before them. If they are not going to accept, you cannot ruin your life behind them. This is a very open book. Whoever wants, let them believe. Whoever wants, let them disbelieve. Your responsibility ends with only conveying the message before them. But it's a natural way of Prophet sallallahu alaihi wasallam having taken this matter so seriously that he would be desperately wanting people to accept Islam or accept the verses of the Quran. Allah subhanahu wa ta'ala says, we have made this world attractive. हमने जो है इस जमीन और इस दुनिया और इस जिंदगी को हम अट्रैक्टिव बना है, रौनकदार बना है, और गुनाह करना बहुत आसान हो जाता है. लेकिन जो अपने आप को कंट्रोल करे, नफ्स पर काबू पाए और बुराइयां और बदकारियां और फहश और मुनकर से अपनी जिंदगी को बचा कर रखे, यही असल में कामयाबी हासिल करने वाले हैं. So Allah subhanahu wa ta'ala says, all that we have made on this earth is very, very attractive. Don't become victims of this attraction and temptation. You will ruin your life. Your dunya and akhirat both will go away. Both you will lose. And remember, inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluhum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alayha saydan jurza. And we are going to make this at one point of time flat land. That means all that adornment, all that beauty, all those attractions are all temporal. They'll all fade away. They'll all go away at one point of time. And Allah subhanahu wa ta'ala will establish the Yawm al-Qiyamah. Am hasibta anna ashab al-kahfi wal-raqimi kanu min ayatina ajaba. Is our fityatu al-kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Or do you think ashab al-kahf, that the companions of the cave, were raqim, and the inscription were from our signs a wonder? When took refuge, fitya means some youth, when took refuge some youth towards the cave, then they said, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Mark this dua, read it often, and if you have not memorized, try to memorize it. Very, very powerful dua taught by Allah subhanahu wa ta'ala. Or do you think that the companions of the cave and the inscription were from our signs a wonder? When took refuge some youth towards the cave, then they said, Our Lord, grant us from yourself mercy. Grant us from yourself mercy and facilitate for us from our affairs the right path. क्या तुम समझते हो कि गार वाले और कुतबे वाले वो हमारी अजीब व गरीब निशानियों में से थे? जब पनाह ली कुछ नौजवान गार में, फिर उन्होंने दुआ की, हमारे रब अता कर हमें अपनी तरफ से रहमत और मुहैया कर हमारे लिए हमारे कामों में सही राह. Now this dua which I said, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada, is a very powerful dua in the sense that whenever you are at the crossroads, when you are unable to take the right decision in any matter in life, जब तुम जो है एक ऐसे सिचुएशन में आप पहुंचते हो जहां पे तुमको फैसला लेना मुश्किल हो जाता है, क्लैरिटी नहीं मिलती है, तो उस वक्त पे ये दुआ बड़ी कारगर होती है. इट्स वेरी वेरी पावरफुल दुआ. And Allah subhanahu wa ta'ala, if we recite this dua with all sincerity, Allah subhanahu wa ta'ala will give us clarity, help us to take the right decisions in life, which will be a source of success both in this world and the hereafter. Now, in the case of these companions of the cave, it so happened that during their time, the king who was ruling was a polytheist, and he would not tolerate anybody worshipping Allah alone or worshipping.
So the moment he got to know that there are certain youth have embraced Islam and they have been practicing the ideology of monotheism, and they're not prepared to accept the religion of the land, then he summoned them and he threatened them and warned them, and he said, either you will have to give up this ideology of monotheism and the religion which you are following and accept the religion of the land, or you may have to be killed, or you will be killed. दो ही चीजें हैं, या तो तुम्हारे इस तौहीद के अकीदे को छोड़ देना है या तुमको अपनी जान खो देना है. Now these youth are in a fix. If they're going to accept the religion of the land, then they will have to give up their faith. And if they're going to hold on to their faith, they will have to give up their life. Know what to do in such a situation. So they do dua to Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah, guide us out of your mercy and show us the right path. हमें जो है सही राह इख्तियार करने को हमें जो है तो मदद फरमा, तेरे अपने रहमत से हमारे को सही रहनुमाई फरमा. तो इन्होंने हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ की. तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला is now guiding them to go away and take refuge in a cave which is in the remote place far away from the city, in the outskirts, where Allah guides them, and they go there. And what happens? The verses following are going to give that explanation. Now, what is the Raqim? The inscription. There are several meanings and explanations given about this. After the Ashab-e Kahf actually passed away, the people placed tablets over it as a monument. So this is one meaning. The other meaning is it is also supposed to be in the name of a city. So there's so many explanations which have been given. But the main essence of this entire matter is the dua which the youth are now presenting before Allah to ask Allah to guide them so that they can preserve their faith and save their lives as well. فَضَرَبْنَا لَآذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا. Then we patted them on their ears. उनको जो है हम थपका दिए उनके कानों पर. Then we patted them on their ears. In the cave, in bracket, they slept for a number of years. In the cave, in bracket, they slept for a number of years. Sinina adada, for a number of years. Summa basnahum, then we raised them. Then we woke them up, then we raised them, that we may know, Ayyul Hisbain, which of the two groups would be able to best count or best calculate how long they stayed, Amada, the time period. I repeat the translation. Then we patted upon their ears. In the cave, they slept for a number of years. Then we raised them or we woke them up, that we may know, Ayyul Hisbain, which of the two groups would best calculate how long they stayed, Amada, the time period. फिर हमने थपका कर उनके कानों पर गार में उनको सुला दिया कई साल. फिर हमने उठाया उनको या उनको होशियार किया ताकि हम जाने उनमें से कौन से दो ग्रोह बेहतरीन हिसाब लगा सके कि कितनी देर वो रहे, वो मुद्दत, यानी कितनी मुद्दत वो उस हाल में रहे. नानु नखुस्सु अलैका नबाहुम बिल हक इन्नहुम फित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदन वरबतना अला कुलूबिहिम इस क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़ि लन नदवा मिन दूनिही इलाहन लक़द क़ुलना इज़न शतता. We narrate upon you their information bil haq, with truth. Verily, there were some youth who believed in their Lord, wazidnahum huda, and we increased them in guidance. Warabatna ala qulubihim, and we strengthened their hearts when they stood up and they said, Rabbuna Rabbus samawati wal arz, our Lord, Lord of the heavens and the earth. Never we shall invoke from beside him gods. Certainly we will be saying in such a case enormous lies. बेशक हम
बयान करते हैं आप पर उनका वाकया हक के साथ। बेशक वो कुछ नौजवान थे जो ईमान लाए अपने रब पर, वज़िदनाहुम हुदा, और हमने जो है बढ़ा दिया उनको हिदायत में, और हमने मजबूत कर दिया उनके दिलों को। जब वो खड़े हुए और उन्होंने कहा, हमारा रब, रब आसमानों और जमीन का, हरगिज हम नहीं पुकारेंगे उसके सिवा कोई और माबूद, यकीनन हम कहेंगे ऐसी सूरत में एक बेजा बात। So Allah subhanahu wa ta'ala guided them, and as they went outside the city, they saw a cave, they entered the cave. Allah put them to sleep there for many, many years, because they took a firm commitment that they will not associate partners with Allah and not yield and succumb to the pressure of the king who's asking them to adopt the ideology of polytheism, and they were not prepared to give up monotheism. So Allah subhanahu wa ta'ala, on account of their firm belief and conviction and faith, guides them to the cave. So Allah subhanahu wa ta'ala उनके इस यकीनी कैफियत को कबूल किया, अल्लाह ने उनके दिलों को और मजबूत किया, ईमान में पुख्ता किया, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें साबित कदमी अता फरमाई। हाउलाई कौमुन इत्तखज़ू मिन दूनिही आलिहा लौला यातूना अलैहिम बिसुल्तानिन बय्यिन फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा व इज़ तज़लतुमूहुम वमा यअबुदूना मिन दूनिल وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويحيي لكم من أمركم مرفقا. These are our people who have taken from besides him gods. لولا يأتون عليهم بسلطان, why not they bring upon them an authority clear? فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا, then who can be more unjust than he who invents against Allah a lie? وَإِذِ تَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ, and when you withdraw from them and what they worship except besides Allah, فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ, then take refuge in the cave. يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ, will shower for you your Lord out of his mercy, or he'll spread out for you your Lord out of his mercy. وَيُحَيِّ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا, and he will facilitate for you from your affairs, granting ease. ये हमारी कौम, उन्होंने बना लिया उसके सिवा यानी अल्लाह के सिवा औरों को माबूद। क्यों नहीं वो ले आते उस पर कोई सनद वाज़े? उससे बड़ा जालिम कौन हो सकता जो इफ्तरा बांधे अल्लाह पर झूठ। और जब तुम किनारा कशी अख्तियार करो उनसे और जिसकी वो इबादत करते हैं अल्लाह के अलावा, तो पनाह ले लो गार में, निछावर कर देगा अल्लाह तुम पर, निछावर कर देगा तुम पर तुम्हारा रब अपनी रहमत, और मुहैया करेगा तुम्हारे लिए तुम्हारे काम में आसानी. So between themselves they have been communicating, between the cave, the companions of the cave are communicating between themselves and saying, our people, how ignorant they are behaving. They are worshipping other gods besides Allah subhanahu wa ta'ala. Do they have any proof for this? And isn't not great injustice to commit shirk? Answer is of course yes. So now they are telling each other, well, we are asking Allah for help. Now let's go and take refuge in this cave which Allah has guided us towards. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. And you see the sun, when it rose, تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتِ الْيَمِينِ, it declined from their cave to the right. وَإِذَا غَرَبَتْ, and when it set, it turned away from them to the left. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ, while they were in the midst of it. ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ, that was from the signs of Allah. Whom guides Allah, then he is the guided one, and whom he lets go astray, فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا, then never you shall find for him any protector or anyone to lead him to the straight path. और तुम देखते हो, और तुमने देखा सूरज जब वो तुलू हो रहा था, वो झुक कर चला जाता था उनके गार से दाएं हाथ, दाएं की तरफ, और जब वो गुरूब होता था वो पलट जाता था
बाएं की तरफ जब वो उसके दरमियान में थे उसमें। ये अल्लाह की निशानियों में से है। जिसको हिदायत दे अल्लाह तो वही हिदायत याफ्ता हो सकता है, और जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला गुमराह होने छोड़ दे तो हरगिज तुम नहीं पाओगे उसके लिए कोई कारसाज या उसको सीधी राह दिखाने वाला। अल्लाह ने ऐसे इंतजाम किया इस गार के मामले में कि जब ये नौजवान गार के अंदर चले गए तो अल्लाह ने फौरन उनको थपका कर सुला दिया। और अल्लाह ने जो है ऐसे इंतजाम किया उस गार के बारे में कि जब सूरज तुलो है उसकी शुआएं अंदर ना जाए और उनको डिस्टर्ब ना करें। इतनी शुआएं जाए जिससे जो है उनका जिस्म ताजा रह सकता है। यही मामला हुआ तुलू होने के वक्त और गुरूब होने के वक्त। अल्लाह फरमाता है तुम गौर करो ये अल्लाह की निशानियां ने तो क्या है। अल्लाह जब किसी को हिदायत देने का फैसला करता है तो उसके लिए बेहतरीन सहूलतें फराहम करता है और हिदायत से उसको नवाजता है। लेकिन जो लोग हिदायत हासिल करना नहीं चाहते, जो गुमराही में भटकना चाहते हैं, अल्लाह भी उनको छोड़ देता है। और जो शख्स गुमराह होने चला जाता है तो कोई फिर अल्लाह के सिवा उसको सीधे रास्ते पर नहीं ले आ सकता। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला when he has accepted the dua of these young men who were very firm and clear about preserving their iman, Allah subhanahu wa ta'ala made such excellent facilities and arrangements for them that when the sun would rise or set, the rays of the sun will not go and penetrate into the cave so much so that it would disturb their sleep, but enough light would be there to keep their bodies fresh. And Allah explains this by saying, whom Allah has taken a decision to guide, nobody in the world can ever turn him away from guidance. And who Allah subhanahu wa ta'ala lets go astray, then there will be nobody to guide him to the straight path. This is the power of Allah. And that is why we need to extensively keep asking Allah for guidance. It is not sufficient that we have accepted Islam and everything is going fine. No. Shaitan is laid his snare. Shaitan ne apna jaal phaila kar rakha hai. Allah subhanahu wa ta'ala should protect us. Shaitan can anytime influence us and we can become victims of Shaitan. So we need to preserve our iman. We need to be obedient to Allah. We need to submit and surrender before Him. And we should to abandon all elements of shirk from our lives until our last breath. For this, we need to keep asking Allah for guidance extensively. That is why we have been given this opportunity and facility to recite Surah Fatiha in every rak'ah of the Salah, wherein we ask Allah for Ihdina Siratul Mustaqim. We are all in need of guidance. We are all in need of guidance. And guidance can come only from Allah. And from Allah means from the book of Allah. Prophet has said, if anybody would search or seek guidance from any other source other than the Quran, he will go astray. हिदायत अल्लाह ही की तरफ से आ सकती है, हिदायत अल्लाह की किताब ही के जरिए से आ सकती है। और अल्लाह के रसूल ने कहा, कोई हिदायत हासिल करे किसी और जरिए से, किसी और जराए से कुरान के अलावा, तो वो गुमराह हो जाएगा। May Allah subhanahu wa ta'ala help us to strengthen our relationship with the Quran, understand this narrative in the right perspective. Many more points Allah is sharing on this subject of the companions of the Kahf. Inshallah, looking forward to seeing all of you next week, Monday evening, same time, with the rest of the narration coming up. Very interesting narration and episode. Don't miss it. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us guidance. Ameen. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alameen. Subhanallahi bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.